Hello everyone. I welcome you all to this lecture, and in this lecture we will be discussing the next topics from isomerism, that is functional isomerism and the metamerism. These two things we will be discussing in this lecture, and in the previous lecture we have discussed chain isomerism and position isomerism that we have discussed. Chain isomerism and position isomerism that we have discussed in the previous lecture, and now we are starting with the functional isomerism. So what is the meaning of functional isomerism? Let us Functional isomerism simply means when isomerism arises because of difference in the this is one of the kind of structural isomerism because of difference in the functional group. There is a difference in the functional group, then what arises is known as functional isomerism. ठीक है? Compounds having same molecular formula, compounds having same molecular formula but different structural formula due to difference in functional group, but different functional group, but different functional ग्रुप. ठीक है, तो उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या होता है, सेम होता है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप इनकी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं. सच आइसोमर्स आर दी फंक्शनल आइसोमर्स. तो इसमें अगर अपन पहला एग्जांपल ले, सिंपलेस्ट काइंड ऑफ, हमारे पास में है एल्कोहल एंड ईथर्स. एल्कोहल एंड ईथर कैसे, इसमें आप CH3 CH2OH लो, ठीक है, और एक CH3OCH3 लो. ठीक है, तो दोनों का ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, C2H6O, लेकिन इनके जो IUPAC नेम्स हैं वो भी अलग अलग हैं और फंक्शनल ग्रुप भी अलग अलग है. इसका नाम है इथेनॉल और इसका नाम है मिथॉक्सीमीथेन. दिस इज एन ईथर व्हाइल दिस इज एन एल्कोहल. तो ऐसा किसी भी एक एल्कोहल और ईथर में हो सकता है, दैट इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म. सेकंड अपन एग्जांपल लेते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन. एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन के अंदर डबल बॉन्ड O की जो फंक्शन पोजीशन है सिर्फ उसका फर्क होता है. फॉर एग्जांपल प्रोपेनल के, दिस इज प्रोपेनल एंड दिस इज CH3C डबल बॉन्ड OCH3. दिस इज प्रोपेनॉल, दिस इज प्रोपेनॉल. तो इन दोनों का भी फॉर्मूला जो है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो C3H6O ही है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग है. डबल बॉन्ड हो यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे और यहाँ पे सेंट्रल कार्बन पे. तो इसीलिए ये दोनों कंपाउंड्स क्या है, अलग अलग है. इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सब कुछ अलग अलग है. ठीक है, बस इनका सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है. तो ये भी क्या हुए, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हुए. इसी तरीके से जो सभी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैं वो एक दूसरे के क्या होंगे, फंक्शनल आइसोमर्स. अब अपन थर्ड एग्जांपल लेते हैं अपना क्या, एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर. कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर. तो इसमें अगर अपन बात करें तो ये है CH3C डबल बॉन्ड OOH. ठीक है, ये एसिटिक एसिड. और CH3 या फिर HC डबल बॉन्ड OCH3. ठीक है, मिथाइल मिथेनॉइड. एक तो है इथेनॉइक एसिड और एक है मिथाइल मिथेनॉइड. एक है कार्बोक्सिलिक एसिड और एक क्या है, एस्टर है. एक तो इथेनॉइक एसिड है और एक मिथाइल मिथेनॉइड है. ठीक है, तो ये भी एक दूसरे के क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स. ये भी एक दूसरे के क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दैट इज C2H4O2. ठीक है, C2H4O2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है अलग अलग है. ठीक है, एक आपका एसिटिक एसिड है, दैट इज इथेनोइक एसिड, और दूसरा आपका मिथाइल मिथेनॉइड है. इसी तरीके से जो एस्टर्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं एक दूसरे के क्या होंगे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म को यहाँ पे ये करेंगे.
नेक्स्ट है डाइईन्स एंड एल्काइंस। ठीक है, डाइईन और एल्काइंस का भी जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CH2 डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड CH2 और CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इनका भी जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या है, सेम, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इनका अलग अलग है। तो ये आपका C3H4, ठीक है, दिस इज C3H4। ओके, सो ये आपकी बात हो गई इसकी डाइन या फिर एल्काइन। फिफ्थ अपना नाइट्रो एल्केन एंड एल्काइल नाइट्राइट। नाइट्रो एल्केन एंड एल्काइल नाइट्राइट। ठीक है, तो जैसे CH3NO2, ये नाइट्रोमीथेन, ठीक है, या फिर जो है नाइट्रोमीथेन, ठीक है, और जो CH3ONO है, ओ एन डबल, दिस इज आपका इथाइल, मिथाइल नाइट्राइट, दिस इज आपका मिथाइल नाइट्राइट। इसी तरीके से साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। तो साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड को देखें तो साइनाइड हमारा होगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, ये है साइनाइड, और CH3N ट्रिपल बॉन्ड C, ये है आइसोसाइनाइड। एग्जाम्पल है हमारे पास में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन। तो इसके लिए जो मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा वो लेना चाहूंगा प्रोपेनामाइन का। तो ये है आपकी प्राइमरी अमीन CH3NH CH2 CH3, ये है सेकेंडरी अमीन एंड CH3N CH3 CH3, ये आपकी टर्शरी अमीन। सो दिस इज N डाइमिथाइल मिथेनामाइन, दिस इज प्रोपेनामाइन, दिस इज N मिथाइल इथेनामाइन। ठीक है, so that's it. Next is alcohols, aromatic alcohols, phenols and ethers. Aromatic alcohol, phenol and ethers. So either this is benzyl alcohol, either this is cresol, either this is anisole. Okay. All the three are functional isomers of each other. All the three are functional isomers of each other. So that's all regarding the functional isomerism. So alcohol and ether, aldehyde ketone, carboxylic acid and ester, dienes and alkyl, nitroalkyl and alkyl nitrite, cyanide and isocyanide, and then primary, secondary, and tertiary amine, aromatic alcohol, phenol, and ether. So that's all. Now let us, that is metamerism. So what is the meaning of metamerism? Metamerism simply means when across, first of all, this kind of structural isomerism, this is one of the kind of a structural isomerism, and this is shown by the compounds having bivalent functional group. Bivalent functional group. And while showing this isomerism for a compound, the functional group must remain same. The functional group must remain same.
So when length of carbon chain across a bivalent functional group is different, okay, when the number of carbon atoms across a bivalent functional groups are different, then that is known as metamerism. Then that is known as metamerism. So let us write the definition of metamerism. So its definition can be written as the compounds having same molecular formula, but different number of carbon atoms on either side of the functional group, on either side of the functional group. That is metamerism. That is metamerism. So what is metamerism? The compounds having same molecular formula but different number of carbon atoms on either side of the functional group. That is known as metamerism. That is known as metamerism. So let us have a look. For example, the groups like ethers, for example, in the case of minimum 3 carbons, we need 4 carbon minimum we need to show metamerism. Suppose this is ethoxyethane and now this is methoxypropane. So this is an example of metamerism. These two are the examples of metamerism. So what's the relation between both these two? They have same functional group, okay, but they have difference in number of carbon atom across the bivalent functional group. So that is metamerism. Next, ethyl ethanoate, or you can make this propyl methanoate, or you can make this methyl propanoate. Okay, so all these are metamers with respect to each other. All these are metamers with respect to each other. All these are esters only, and all these are metamers with respect to each other. Other groups which can show metamerism are thioethers. Okay, and secondary amines, tertiary amine also can show. Okay, and amides, N-alkyl amide. That can also show. So these are the anhydride. So these are the groups which can show tautomers. Important, that is ketone. Ketone also show tautomers. Metamerism, sorry. Ketone also show metamerism. The question we are having, draw all the possible isomers for pent 1 ion. So it can be like pent 1 ion, or it can be CH2 double bond CH, CH, CH double bond CH2.
It can be pent 1,4 diene, CH2 double bond C, double bond C, CH2, CH3. It can be pent 1,2 diene. It can be CH2 double bond C, H, and then CH double bond CH, CH3. It can be pent 1,3 diene. So it can be conjugated. It can be cumulative, or it can be isolated. So what isolated simply means they are far away. They have the gap of more than two single bonds or minimum of two single bonds in between them. Cumulative means they are one after the other, and conjugated means they have the gap of one single bond in between them. That system is called conjugated system. Okay, so that was about dienes. So here we are done with the functional isomerism and metamerism in this video. In the next, we will be discussing tautomerism. Okay, so that's we will be discussing in the next lecture, next video. Okay. Thanks for watching the video. Have a great day.